Okay, so kids, let's take some more cases now. Yeah. Chalo. Okay, so have a look. So the fourth case is condition for exactly one root of a quadratic to lie in the interval k1 and k2. And there is exactly one root between k1 and k2. Okay, so suppose what can happen. There is one root, and this is a root between k1 and k2, or it can be like this also. One root between k1 and k2. Is it okay, kids? Exactly one root between k1 and k2. Chalega? Yes, sir. So kids, can I say interestingly then, if one root is between k1 and k2, then can I say if this is a quadratic, then here your f of k1 will be positive. Do you agree? Do you agree? F of k1 will be positive. Yes, sir. Similarly, look at this. Huh? Can I say here f of k2 will be negative? Yes, sir. Pakka? Similarly, even here, see, f of k1 is negative, f of k2 is positive. So can I conclude here if f of k1 is negative, f of k2 is positive, like this positive and negative, so can I say दोनों का product will always be negative? Do you agree? दोनों का Yes, sir. product will always be negative. Now this is positive and this is negative. So multiplication has to be negative. Similarly here also, f of k1 here is negative and f of k2 here is positive. So when you multiply, it becomes negative. Similarly, look over here also. If suppose A is negative, the curve is turning downwards. So this is f of k1, which is positive. F of k2, negative. F of k1, negative. F of k2, positive. So the multiplication has to be negative. Does that make sense? Yes, sir. So this is a condition which you should remember, that if one root is between k1 and k2, exactly one root is between k1 and k2, then f of k1 into f of k2 will always be negative. So keeping this thing in mind, let's try one problem. क्या लिखा है? Find the value of m if there is exactly one root in 1 and 2. Exactly one root, huh? So if there is exactly, okay, a is positive, so the graph will be like this, okay? Between 1 and 2, okay. So basically, if suppose I draw a curve like this, because the coefficient x square is 1, so curve is turning upwards. And what they are saying one root. So suppose let this be 1 and let this be 2. So what they are saying exactly one root between, exact, this is like a root. So exactly one root between k1 k2. So I can say f of 1 into f of 2 will be negative. Do you agree, kids? Yes, Do sir. you agree? अरे हाँ या हाँ के ना? Yes, sir. Now you just have to plug in here x का value 1 and x का value 2. तो put x का value 1, तो आपको मिलेगा 1 का square minus m minus 3 into 1 plus m. Okay, x का value 2, तो यहाँ पर आएगा 2 का square m minus 3 into 2 plus m less than 0. So it becomes here 1 minus m plus 3 plus m. यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4 minus 2m plus 6 plus m less than 0. आपको ये m डिसअपियर, तो 4 तो चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा minus m plus 10 less than 0. So automatically my m will be greater than 10. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Okay, so this was simple problem. तो कभी भी कोई भी रूट अगर किसी इंटरवल के बीच में है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से f of k into f of k1 into f of k2 will always be negative. तो हमें ये भूलना नहीं है, ठीक है? Okay, and let's take the last concept of this part. एक now, kids. Yeah. Okay, condition
that both the roots of the quadratic lie in an interval. Both the roots are lying in an interval where k1 is less than k2. So suppose this is k1 and this is k2. And what they are saying, both the roots, matlab both roots, alpha and beta, both the roots are lying in the interval k1, k2. Do you understand this statement, kids? Both the roots are between k1 and k2. Do you understand? Yes, sir. Okay. So if you understood this case, then I can say now there are two possibilities. It can be either like this or it can be like this also, wherein both the roots, suppose both the roots are alpha and beta and they both are equal. And this is suppose k1 and this is suppose k2. So there are two possibilities. It can either touch or it can not, it will intersect. So in either of the cases, can the discriminant should be greater than or equal to 0? Do you agree? Yes, sir. Next. Now, the vertex is always at minus b by a. Do you agree? Minus b by 2a. Do you agree? Yes, sir. So can I say minus b by 2a will be between k1 and k2? Does that make sense? Yes, sir. Good. Between k1 and k2. Next, f of k1 is positive. Of course. Can I say f of k1 is positive? Yes, sir. Can I say f of k2 is also positive? Yes, sir. Yes, sir. Is a positive? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So rather this should be written like this: a into f of k1 is positive and a into f of k2 is positive. So basically I'm getting these all conditions which I have to remember. Now this was for a positive. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरा दोनों रूट k1 k2 के बीच में है तो क्या होगा, या तो आपका रूट इक्वल होगा या तो दो रूट्स मिलेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0. Minus b by 2 will be between k1 and k2, and your a into f of k1 will be positive. This is f of k1. So a into f of k1 will be positive and a into f of k2 will be positive. Now this was for a positive, and you can check even for a negative it will remain same only. Let's check it out. Check it out. See. So again, suppose this is your k1, this is your k2, and your both the roots are between k1 and k2, and it can be either like this or a graph can be like this also, where both the roots are equal. At that time, discriminant will be greater than or equal to 0. Do you agree, kids? Two roots or equal root, है ना, kids? Yes, Yes, sir. sir. Again, your minus b by 2 is somewhere here only, है ना, जहां पर vertex होता है आपका. So minus b by 2 will be between k1 and k2. Even this is matching. Next, your a is negative, you all know, and your f of k1 is negative. Do you agree? Yes, sir. Okay. Similarly, here your f of k2. Okay, f of k2 is also negative. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So can I say if a is negative, f of k1 is negative, so a into f of k1 will be greater than 0. Does that make sense? Yes, sir. Similarly, a into f of k2 will be greater than 0. Do you agree? Yes, sir. So what did we get? We got actually 4 conditions, I can rather say. First, discriminant will be greater than or equal to 0. If your two roots are between k1 k2, then this can happen. First condition. Second condition, your minus b by 2a will always be between k1 and k2. Third condition, your a into f of k1 in either case was greater than 0. And the fourth case, a into f of k2 will be greater than 0. Is it clear? Yes, sir. Okay, and there has been few advanced questions in the past which was based on this particular concept. तो हमें पता होना चाहिए. Let me try a problem so that you understand. So it is pretty clear. Both the roots are in the interval 1 and 2. इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपका a positive है. Coefficient of x square positive. The curve is turning upwards. Suppose ये आपका 1 है और ये आपका 2 है. और आपके जो दोनों रूट हैं, और यहाँ और एक केस भी आएगा, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है. Okay? ऐसे भी हो सकता है. Okay. अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके जो दोनों रूट्स है, सपोज ये अल्फा और बीटा, ये दोनों रूट्स के बीच में है, तो मेरे पास सारे कंडीशन मेरे पास रेडी है. तो लेट्स यूज इट. पहला वाला, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डू यू एग्री? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. ओके, आई थिंक ये हमने सॉल्व किया है पहले, तो मैं देख लेता हूं. आई थिंक मैंने पहले किया है इसको सॉल्व.
तो मैं खामखा टाइम वेस्ट नहीं करता, ढूंढते ढूंढती हालत खराब होगी। ओके, ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 9 टू इन्फिनिटी, minus infinity to 1 and 9 to infinity, minus infinity to 1, so m belongs to minus infinity to 1 और ये क्या है, यूनियन 9 to infinity। आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है, आपका जो माइनस बी बाई 2a है ना, इट शुड बी बिटवीन व्हाट टू व्हाट, बिटवीन 1 and 2। चलेगा k1 and k2, चलेगा किड्स? Yes, sir. Your b is negative, so it becomes positive, so m minus 3, your a का value is 1। तो आपको मिला 2 less than m minus 3 less than 4, so your 5 is less than m is less than 7। तो मेरा m का value is between 5 to 7। Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Good. Third condition. Okay, I think I can tell you now the answer has to be null set only. Why answer should be null set? Because it's between 5 and 7. It's मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करूंगा ऑब्वियसली। लेकिन मेरे को यहाँ से पता चल गया आंसर नल सेट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर m क्या बोल रहा है, किसके बीच में होना चाहिए, 5 and 7। 5 and 7। जबकि ये क्या बोल रहा है, 1 या उससे कम, 9 या उससे ज्यादा। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन आने वाला है ही नहीं, है ना किड्स? Yes, sir. तो आंसर नल सेट ही होने वाला है। फिर मैं सब स्टेप्स करके बता देता हूँ, क्योंकि तीनों पे फिर कॉमन ढूंढना पड़ता है। ओके, थर्ड क्या है, a इंटू f of k1 should be greater than 0। तो आपका a है 1 and f of 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, पुट 1 here, so you get put 1 here, you get m minus 3, x के बदले 1 and plus m, so I get minus m plus 3 plus m। Okay, so I get 4 greater than 3। तो यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर I can say from here I can say m belongs to any real number because I have not got any value, है ना kids? हाँ कि नहीं kids? Yes, sir. Okay, and what is the fourth condition? Your a into f of 2 will be greater than 0। Your a is 1, your f of 2, plug in 2 here, so 2 का square will be 4, I'll plug in 2 plus m। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर 4 minus 2m plus 6 plus m। तो minus m plus 10 will be greater than 0, so m is less than 10। अब पता है क्या करना है कि आपको ना चारों में कॉमन फाइंड करना है। Is there anything common between all four? Is there anything common between all four? No, sir. Nothing common। See, ये क्या बोल रहा है, 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 5 के 7 यहाँ तो होने वाला है ही नहीं। So straight I can say m belongs to null set। That is the final answer। Is it clear? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। So this was it kids। So I think तो हमने यहाँ पर अभी जो हम करें उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया है, फिर भी अभी और एक सम खत्म कर लेते हैं, 1-2 सम्स, फिर लास्ट पार्ट बाकी रहेगा। क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स आपने फिर देख लिया होगा, मैं आपको वापस एक रिकैप दे देता हूँ फटाफट लोकेशन ऑफ रूट्स के, तो आपको भूले नहीं फिर आप। ओके, पहला था कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी मोर देन अ रियल नंबर के। तो वो टाइम पे ये सारे कंडीशन, मतलब बोथ रूट्स आर मोर देन के। सेकंड क्या है, both roots are less than k। both the root that is alpha and beta is less than k। उसके बाद after that I had a condition wherein a k is between two roots alpha and beta। okay, after that I had exactly one root between k1 and k2, and then finally right now we did the last one, that is both the roots are between k1 and k2। ओके, ये सारे कंडीशन आप ठीक से याद कर लेना। याद मतलब बाय हार्ट करने से है नहीं, आप समझ जाओगे तो आपको समझ जाएगा क्या करना है। ओके, ठीक है, बट या इफ यू स्टिल प्लीज बाय हार्ट इट सो दैट यू रिमेंबर द कंडीशंस फॉर लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, लेट मी गो अहेड विद 95th प्रॉब्लम। ओके, इट सेज A, B, C are real numbers and a quadratic is given to you। ये recording चालू है ना kids? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yeah। A, B, C be real number if the quadratic is given to you has the two real roots। उसके पास दो real root है, उन्होंने बोला है। Correction है यहाँ पर।
where one root is less than -1 and the other root is more than b. Other root beta is more than 1. तो दो रूट है, दोनों रियल रूट्स है. रियल रूट्स का मतलब होता है आपका जो कर्व है आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक रूट -1 से कम है और दूसरा रूट 1 से ज्यादा है. अब खाली की प्रॉब्लम यहां पर जो होगा वो है कि सर ये ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो अपने को पता ही नहीं है. केस लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स बी स्मार्ट, लेट्स डिवाइड बाय ए. तो अपना मगजमारी यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका. Isn't that cool, kids? ए डिवाइड बाय ए किया तो फायदा क्या हो गया अभी? A is 1 now. Straight away a becomes positive है ना, coefficient of x square become positive है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And since the coefficient of x square is positive, the curve has to turn downward, upwards. Turning upwards हो जाएगा. वो टर्निंग अपवर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, तो मैं कर्व बना लेता हूं जो टर्निंग अपवर्ड्स होना चाहिए. ओके, आपका ये जो कर्व है टर्निंग अपवर्ड्स हो गया. और क्या लिखा है, रीड करो उसको ठीक से. दे आर सेइंग बोथ द रूट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा have two real roots, alpha beta. One root is less than -1. One root is less than -1. एक मिनट, I'll just write it down properly. One root is, ये अल्फा जो है less than -1 चलेगा. One root is less than -1 and your beta, other root is more than 1. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, तो वन रूट, एक रूट है अल्फा जो -1 से कम है, दूसरा रूट जो है बीटा वो 1 से ज्यादा है. वन रूट लेस देन -1, अदर रूट मोर देन 1. नाउ केस एनी, कोई भी बच्चा बता सकता है अभी यहां पर कि आपका f of -1 शुड बी नेगेटिव. डू यू एग्री? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. ओके, सो आई जस्ट राइट इट हियर. ओके, एक मिनट. आपका f of -1 विल बी नेगेटिव, और एंड और एक और क्या है, f of 1 भी नेगेटिव होगा. डू यू एग्री? yes, sir. Yes, sir. f of -1 भी नेगेटिव होगा, 1 भी नेगेटिव. एक काम करो ना, पुट x as -1. चलो, and then you'll get your answer. Put x as -1. x को -1 पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. तो क्या मिल रहा है देख लेते हैं. तो x -1 ले रहा तो यहाँ पर आएगा 1 आ जाएगा. x को -1 लूंगा तो यहाँ पर आएगा -b/a, यहाँ पर आएगा +c/a लेस देन 0. I got this answer. हाँ ना kids? Yes, sir. Now, when I say f of 1, so I can plug in x as 1. So 1 plus b/a plus c/a less than 0. Is it okay? Yes, sir. Can I club it now? It is done, na kids? हाँ क्या नहीं? Can I club them? तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस c बाय, यहाँ पर ये नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ b बाय a लेस देन 0. Did you understand? Yes, sir. Okay, so this was a problem. It has come in the previous some IIT papers. हाँ, मुझे याद नहीं है, but आया है कहीं ना कहीं. तो ये ठीक है. चलो. The interval a for which the equation that you see in front of your eyes has at least solution for all x belonging to 0 to pi/4. मतलब इसके पास सोल्यूशन है. ओके, सोल्यूशन है इस बंदे के पास, मतलब x का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब ओके इसके बीच में, तो सोल्यूशन है उसके पास. और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड, अगेन आई एम सेइंग this quadratic has a solution, matlab it has some answer, and the answer of x is between 0 to 45. That's what they are giving, and I want to find a का value. तो पहले एक काम करते हैं, let's think slowly. It's a quadratic in tan. Do you agree? Is it a quadratic in tan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tan का quadratic है, तो can I think of applying Sri Dharacharya here? माइनस बी, when I say माइनस बी तो यहां पर आएगा a-4. चलेगा माइनस बी? चलेगा माइनस बी? Yes, sir. Sir. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
under root of b का square minus 4 a is 1 I think देखो your a is 1 your a is 1 this is b and this is c so b square minus 4ac and c is 4 minus 2a upon 2a now minus b plus minus under root of b square 4ac upon 2a. Now let me simplify this. Of course this is a minus 4. I'm going to open the bracket now. This is actually minus का square plus only है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. I get straight away a square minus 8a plus 16 minus 16 plus 8a. 8a cancel. 16 गया. Now root of a square already this is a so I get a minus 4. Sorry. I'll get a minus 4 plus minus a upon 2. So I'm getting two values of tan x. I will get two values of tan x. तो आपका tan x हो जाएगा क्या यहाँ पर किड्स? It will become a minus 4 plus a upon 2. और tan x क्या हो जाएगा kids? a minus 4 minus tan a upon 2. Do you agree kids? ये चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. So tan x I'm getting minus 2. Now this is not possible. Why tan x minus 2 is not possible? In the from 0 to We 5. want interval of a. That is not the reason that we want the interval of a. Arey Baba, x is between what to what? 0 to 45 na? Yeah, 0. Sorry. If x is between 0 to 45 then tan x has to be positive. Do you agree? Arey हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Of course, Yes, tan sir, cannot yes, be negative. Okay. So I'm getting from here is tan x is equal to 2a minus 4 upon 2. So I'm getting tan x from here as a minus 2. Is it okay? Or is it okay? Yes, sir. Okay. Now kids, I've got tan x. Now I want a का value. Read it. I want a का value. तो ठीक है ना? अभी easy है. अभी देखो बताता हूँ. आप ही बता दो x किसके बीच में है? बता दो मुझे. x किसके बीच में है? 0 to 45 है ना kids? Yes, sir. तो अगर x आपका 0 और 45 के बीच में है तो I can take tan throughout. Okay. Why am I taking tan throughout? Because actually you can just check it out. In the previous slide, I have tan x का value as a minus 2. Okay. Now tan 0 is 0 by the way. And tan 45 is 1. Finally, what is tan x का value from there kids? A minus 2 है ना kids? Yes, sir. So I can write this as a minus 2 less than equal to 1. I can plug it, shift that 2 this. I get 2 less than equal to a less than equal to 3. So finally I get a ka value as between 2 to 3. Do you understand kids? Yes, sir. Okay. In short और एक बार देख लो. कुछ डिफिकल्ट नहीं था. एक्चुअली क्या किया था मैंने tan का क्वाड्रेटिक है तो मैंने श्रीधराचार्य अप्लाई कर लिया. फिर अप्लाई करने के बाद फिर मैंने देखा अरे बाबा मेरा x तो 0-45 के बीच में है तो tan तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए तो मेरा ऑटोमेटिक एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है. And since x is between 0 to 45, so automatically my tan x will be between 0 to 1. And then you just put tan ka value and then get a ka value. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है. आप लोगों को मुझे ना ये आई थिंक मुझे आपके डाउट्स भेजने पड़ेंगे so I can have a doubt solving in the coming week. Is it okay? Yes, sir. है ना? क्योंकि डाउट सॉल्विंग खत्म करने के बाद आपका टेस्ट भी होगा तो आप लोग है ना ऐसा टाइम पास मत करो अपना होमवर्क खत्म करने का. आज मैं आपको और भी बहुत सारा सम देने वाला क्वाड्रेटिक से ही क्योंकि पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. तो आप लोग ना रोज का 2-2.5 घंटा साइड में निकालो अभी होमवर्क खत्म करने के लिए so that in the coming week I can have the doubt solving and then you can have a test. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ चलो. Yeah. Okay kids. So before I go ahead, I think everybody remembers if you have a quadratic equation, I think you all know that sum of the roots, इसके दो roots होते हैं maximum. Sum of the roots is given as minus b by a, and the product of the roots is given as what kids? C by a. Agreed? Yes, sir. Cool. So if you know this, so now come here. Suppose if you have a cubical equation, you have a cubical equation.
and there are three roots, alpha, beta, gamma. At that time, please remember, sum of the roots is given as minus b by a, minus b by a. Then sum of the roots taken two at a time. Sum of the roots taken two at a time का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? Taken two at a time मतलब क्या हो जाता है? Sum of the roots taken two at a time. अरे बोलो ना. Addition of two roots at a time है ना? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, उसका आंसर होता है सी बाय ए. उसका आंसर होता है सी बाय ए. रिमेंबर, उसका आंसर होता है सी बाय ए. एंड देन फाइनली multiplication of all three roots. Multiplication of all three roots. The product is given as minus d by a. It's given as minus d by a. It's given as minus d by a. So remember, minus b by a, c by a, minus d by a. Alternate minus plus होता रहेगा. आप ऐसे याद रखो, ठीक है? So please remember that sum of the roots is given as minus b by a, and the product of the roots is given as, sorry, sum of the roots is given minus b by a. Sum of roots taken two at a time is c by a, and multiplication of all three roots is minus d by a. So minus b by a, c by a, minus d by a. Please remember this, okay? Yeah, you should also know many times in many questions or the books, they will write this guy as ऐसे लिखेंगे कैसे पता है? Summation alpha beta. What is summation alpha beta means? Summation of roots taken two at a time. Do you understand? Yes, sir. Summation of roots. It's a sum. Summation of what? Roots taken two at a time. Do you understand? So they can write like this. So you should understand what does it mean. Is it okay? Yes, sir. अच्छी बात है. तो ये हमें याद रखना है. उसके बाद आगे देखो. आगे अभी देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, बट स्टिल आई थिंक है नहीं, आता नहीं, बट फिर पता होना चाहिए. अगर अब बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो अगेन सम ऑफ द रूट्स विल बी माइनस बी बाय ए. सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, अल्फा, सब कुछ आ जाएगा. टेकन टू एट अ टाइम विल बी सी बाय ए. देन sum of roots taken 3 at a time will be minus d by a, and multiplication of all 4 roots will be e by a. So please remember this: minus b by a, c by a, minus d by a, and e by a. Okay, so sum of two, ऐसा alternate minus plus, minus plus minus plus. Okay, sum of single roots, sum of two roots at sum of roots taken two at a time, sum of root taken three at a time, and sum of root taken four at a time. जो भी sum नहीं खाली product हो जाएगा. Is it clear for all? So summation of two at a time for this is also same. क्या हुआ? The summation. Minus The summation you showed na for the last one. हाँ same है C by A होता है. हाँ. Yeah, okay. Okay. How do you write like this? How do we write like this? We'll write like this. को कैसे लिखते हैं पता है? Many books they will write like this. Summation alpha beta they will write. It means summation of two roots at a time. What do you think? How will they write this then? You can say alpha beta gamma, Gamma. or you can say alpha beta delta. Whatever. You can say anything, but you should take only three roots. Okay? Is it okay? Yes, sir. Summation of three roots at a time. Okay? तो ये आपको पता है. In short, ऐसे याद रखो. Minus b by a, c by a. 42 guys. Minus b by c by a, minus d by a. For if it's a cubicle, minus b by a, c by minus d by n, e by a. If it's a biquadratic. Is it okay? Yes, sir. तो ठीक है ना, मैं आपको कुछ सम्स बता दूंगा तो आपको समझ जाएगा फिर मैं क्या बता रहा हूँ. उसके पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं चाहूंगा आपको एक छोटी नोट बता देता हूं मैं, जो शायद सबको पता है, फिर भी मेरा काम है बताना. मैं आपको बता रहा हूं. एक मिनट, जगह है क्या? ये मैंने बताया था आपको पहले भी. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
minus 3abc is equal to what? Does anybody remember? A plus B plus C into A square plus B square plus C square. Perfect. A plus b plus c into a square plus b square plus c square Minus AB minus minus ab BC. minus bc minus ca. Is it cool, kids? Yes, sir. Okay. उसके बाद I think हम सबको ये भी पता है, we can write a square plus b square plus c square as a plus b plus c the whole square minus twice of ab plus bc plus ac. Is it okay? Yes, sir. Also, a square plus b square, I think everybody knows, can be written as a plus b the whole square minus twice of ab. चलो ठीक है. So this is it, kids, for you. आगे बढ़ते हैं. Correction. Okay. So they've given alpha, beta, gamma are the roots of the equation. Okay, kids, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर your a is 1, your b is 0. Why b is 0? X square. X square coefficient is 0, so your b is 0 automatically, kids. Next, आपका c का वैल्यू 4 है और आपका यहाँ पर d का वैल्यू 2 है. चलेगा ना, kids? Is it okay? Yes. Is it okay? Okay, चलो. Now let's wrap it up. Alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to, of course we know it is alpha. Okay, by the way, I think पहले मैं फॉर्मूला पूरा लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर लोगों को फिर डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो नहीं समझेगा. A cube plus B cube plus 3 cube minus 3ABC is equal to what? Is equal to A plus B plus C the whole cube minus, okay kids, क्या आएगा बता दो? माइनस नहीं, सॉरी मैं क्या गलत लिख, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ. मैं कौन सा फॉर्मूला सोच रहा था, को क्या कर रहा हूँ. या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे करके बता देता हूँ. चलो, okay, I can write this as alpha plus beta plus gamma into I can say alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma plus alpha gamma. But I think this won't be good because हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I think हम एक काम करते हैं, हम राधा में जो पहला वाला कर रहा था वो कर लेते हैं. क्या? Alpha cube plus beta cube plus gamma cube can also be given as alpha plus beta plus gamma the whole cube. है ना kids? I think नहीं वही करना पड़ेगा ना kids, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि it's not a cube plus b cube, it is actually a cube plus b cube plus c cube. So I think we'll have to do that only. There's no other. Okay, it will become pretty big then. ठीक है, it's okay, कर लेते हैं. So let me go ahead. I can call this as minus 3 alpha beta gamma. चलेगा kids? Is equal to alpha plus beta plus gamma alpha square plus beta square plus gamma square minus alpha beta minus beta gamma minus alpha gamma. Actually सम छोटा ही है, मैं बता दो कैसे छोटा है, because उसका सम 0 आने वाला है, देखना. Minus alpha beta beta gamma and क्या बचा? Alpha gamma. Is the formula okay kids for you all? Is the formula okay for all? Yes. Okay, now kids, I think again A is 1, your B is 0, your C is 4 and your D is 2. Do you agree? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Now kids, I don't know, I'm not going to calculate this, but can you tell me what is sum of the roots given as? What is sum of the roots given as? Minus B by Minus B by A. Do you agree? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. What is B का value? 0. 0. Cool. 0 into anything will be 0. है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. I get alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 times of alpha beta gamma will be equal to 0. So automatically my alpha cube plus beta cube plus gamma cube will be 3 times of alpha beta gamma. Is it okay kids? Is it okay? Yes, sir. Okay, ठीक है. अब एक काम कर लेंगे. Let me put the value now. Does anybody remember what is alpha into beta into gamma?
for a cubic. minus d by a. It is C by A, है ना kids? No, not C. No, not C by A. It is not Minus C D by A. by. It is minus of D by A, है ना kids? अरे Yes, देखो, sir. देखो, it is minus D by A, है ना kids? Everyone. Yes, sir. That's it. Let's put it. So 3 into minus D. What is D? What is D ka value? D is 2. A ka value is 1. So finally my answer becomes alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to minus 6. ये आपका final answer हो जाता है. Is it clear for all? Yes, sir. Yes, sir. So in the first look, apparently we were thinking, यार ये तो बहुत lengthy हो जाएगा. Okay, but again we could see examiners helped us indirectly by saying there's no B actually, so automatically this term becomes 0 and then just a short part. चलो अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Look at it again. Okay, they are saying A minus A and B are the roots of this equation. इसके roots है. ठीक है. So kids, I can say everybody knows sum of the roots is given as what? What is sum of the roots? Sum of the roots क्या होता D है? by A. It is minus of B by A. Do you agree? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. What is B का value? Minus 5. It is minus 5. And A का value is 1, by the way. So A and A disappear, so I get straight away B as 5. Now what they are saying? B is the root of which equation? अरे कुछ नहीं यार. Just put it in the equation, check it. Put in the first equation. 5 square is 25. 25 minus 15. What is 25 minus 15? 10. 10 minus 10 is 0. So 5 is the root of this equation. Check कर लेते हैं. 25, 25 and 25. No, this is not the answer. Is the root. Put 5 square. 25, 25, 15. No, this is not the answer. 5 square, 25. 25 cancel. This is not the answer. Is it okay? Of course, in J main only one answer is correct, but yeah, I have a habit of thinking about all the options. क्योंकि एडवांस में ऐसे ही होता है, आपको एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो सोचना पड़ता है. ठीक है, but it was a simple problem, so nothing great in it. चलो आगे. Alpha, beta, gamma are the roots of this guy. इसके roots हैं. Then alpha square plus beta square plus gamma square, and this is what? Okay, ठीक है ना, directly solve कर लेते हैं. Alpha square plus beta square plus gamma square can be written as alpha plus beta plus gamma the whole square minus twice of alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. Is it okay, kids? Yes, sir. Sum of the roots is minus b by a. And sum of roots taken two at a time will be c by a. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. You can check it out. Your a ka value is 1, your b ka value is 0, your c ka value is minus 8, and your d ka value is 8. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now let's put it. आपका b 0 थे तो 0 हो गया. आपका c का वैल्यू minus 8 है और आपके कैपिटल a का वैल्यू 1 है. तो आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है 16. Is it okay, kids? Yes, sir. Let's move. 1 upon alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. I'll take an LCM. तो अल्फा बीटा गामा उसका LCM है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर आएगा गामा, यहाँ पर आएगा अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा. तो ऊपर सम है. सम क्या होता है? सम होता है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय सी बाय माइनस डी बाय ए. डू यू एग्री किड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मिला यहाँ पर b by d. b by d. Okay, now what is b? What is b? b is 0. वो खत्म. The answer is straight away 0. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay, very nice. Okay, तो हमें I hope सबको समझ गया kids. Everyone understood ना kids? अरे हाँ Yes, sir. Okay. Now I'll tell you, see, sometime now examiner will ask you some question based on complex numbers also.
suppose he says this is the equation, and they'll tell you find the value of alpha raised to, suppose, something, alpha raised to 16 plus beta raised to 16, and just giving an example. Okay, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a. एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट दे कैन आस्क यू ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे हम लोग ये सब बाय द वे. या सो गेट प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2. डू यू एग्री किड्स? Yes, Yes, sir. sir. एंड आई थिंक आपको याद होगा मैंने बताया था, एक को मैं अल्फा बोलता हूं और एक को मैं बीटा बोलता हूं. सॉरी, अल्फा एंड बीटा. और किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है जब मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको याद है तो आपको याद होगा मैं बोलता था लेट अल्फा बी ओमेगा एंड बीटा बी ओमेगा स्क्वायर. कुछ याद आया? Yes, sir. हाँ के नहीं किड्स? Yes, sir. तो यहां पर आ जाएगा अल्फा रेस टू 16, यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर रेस टू 32. डू यू एग्री? 16, सॉरी. दिस बिकम्स ओमेगा रेस टू 16 एंड ओमेगा रेस टू 32. डू यू एग्री? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. और एक चीज मैंने रिजल्ट आपको दिया है, आई होप आपको अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, क्या रिजल्ट है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. डू यू रिमेंबर? Omega raised to 4 is omega. Do you remember? Omega square sir. plus omega plus 1 equal to what? 0. हाँ के नहीं? Complex number. Yes, sir. ए याद है कि नहीं याद है आप लोग को? याद है ना सबको? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस. तो यहाँ पर अगर सपोज ये क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकता था, बेसिकली ये ओमेगा रेस टू 4 का ओमेगा रेस टू 4 का 4 हो जाएगा सपोज स्ट्रेट अवे. ओके, तो ओमेगा रेस टू 4 ही हो जाएगा स्ट्रेट अवे, तो सीधा ओमेगा हो जाएगा. आई मीन टू से, सॉरी एक मिनट. हाँ, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बनाया तो आई थिंक आंसर कुछ वियर्ड भी आ सकता है. तो ओमेगा रेस टू 4 इज ओमेगा, तो ओमेगा रेस टू 4 अगेन ओमेगा, तो इट विल बी ओमेगा ओनली. डू यू एग्री? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और यहां पर भी क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा ना किड्स? इज दैट ट्रू? Yes, sir. ओमेगा ही आएगा ना, कि ओमेगा स्क्वायर आएगा? ओके, हाँ, ओमेगा रेस टू 16 into 2. ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन सो दैट पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. उसका आंसर आ जाएगा, रुको मैं करके बता देता हूँ. I just do it properly so that everybody understands. So I can write this is omega raised to 15 into omega. This is omega raised to 30 into omega square. Is it okay, kids? Indices. Yes. What is omega raised to 15 का value? अगर multiple of 3 होता है तो आंसर क्या होता है? 1. Omega raised to 30 is a multiple of 3, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा. हाँ कि नहीं? And what is omega plus omega square का आंसर? -1. And this becomes the final answer. Is it clear? Sir, if it's omega raised to 12, we take it 1 or omega. क्या हुआ? Sir, if it is omega raised to 12, हाँ, we take it 1 or omega. 1 only ना. Omega raised to 12 can be written as omega cube का raised to 4 है ना? Yeah, What is omega cube का value? 1. 1. So, but it can also be written as omega raised to 4 raised to 3. Omega raised to 4 raised to 3, हाँ ना, तो आंसर वही आ गया ना, omega cube. Omega cube is 1. Yeah. ठीक है ना? Yeah. ओके, सीधा याद रखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कैसे किया था मैंने. और ओमेगा क्यूब 1 होता है मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 3 हमेशा 1 ही होता है ना किड्स? कॉम्प्लेक्स नंबर. डू यू रिमेंबर? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. ओके, सो दिस इज इट किड्स. ऐसे कुछ एक दो सम्स होंगे आपको पता होना चाहिए. Finally, this chapter is done, but some extra things for extra information I'm giving. Chapter is done, by the way, lekin. But some extra information. Transformation of equation. Normally, we don't see this much, but still we should know. We don't see much on this part. Transformation of equation. Now, suppose I give you an equation. Suppose some equation is there. Just randomly.
x square minus 3x, suppose, you know, some equation given to you, something, plus 2 equal to 0, whatever, some equation given to you, and you are told to form an equation whose roots are k times the root of the given equation. मतलब आपको वो क्वाड्रेटिक ढूंढना है, आपको वो क्वाड्रेटिक ढूंढना है, इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, अरे बोलो ना, इसका रूट, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, इसका रूट, सपोज इट इज सम रूट इज k टाइम्स इसका रूट, है ना किड्स, Yes, sir. है ना, whose roots are k times the roots of the given equation. तो क्या करने का, खाली replace x with x by k, that's it. मतलब क्या, I'll tell you. So if you want a root, suppose I'll just write a quadratic only so that you have comfortable. So suppose I give you a quadratic and you want that quadratic equation whose roots are k times this root, yeah, suppose k times this root, yeah, suppose 3 times this root, 3 times, 3 times this given root. Suppose इसका root कुछ है, suppose कुछ तो है, अल्फा बीटा का, वो भी है, मुझे नया equation find करना है, so an equation whose roots are 3 times the given root, तो करना कुछ नहीं है, replace x with x by 3, that's it, replace x with x by 3, that's it, replace x with x by k, so x square by 9 minus x plus 2, take an LCM, you get here x square minus 9x plus 18, and this is how you get your answer. Did you understand? Yes, sir. You are finding a quadratic equation whose root is k times the root of the given equation. Similarly, if you want to form an equation whose roots are negative of the root, तो करना क्या, replace x with minus x. मतलब क्या है, बताता हूं मैं. So suppose I give you this equation. I just tell roughly, you know, इसका roots है, I think everybody knows, -2 and -1. तो आपको मैं बोल रहा हूं, चलो वो quadratic ढूंढो जिसका root is 2 and 1, जिसका root is 2 and 1. तो करना क्या, replace x with what? What? Minus -x. Minus x. And then it gives you the answer. So it's a quadratic whose roots are what? Whose roots are 2 and 1. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Good. आगे. Similarly, I think अभी you read it, you'll understand. Find the equation whose roots are k more than the roots. K more than the root. So suppose I want a quadratic whose roots are, suppose 3 more. 3 more. So 3 more मतलब क्या? 3 more मतलब क्या? 3 more मतलब quadratic whose roots sorry. 3 more. 3 more मतलब whose roots are 1 and 2. Do you understand, kids? Do you understand? 3 more. 3 more मतलब क्या? K more. तो मुझे वो quadratic ढूंढना है जिसका roots 1 and 2 है. तो हम ये सब नहीं करें, हम डायरेक्टली करेंगे. कैसे करेंगे डायरेक्टली? तो यहां बोला है अगर आपको k मोर चाहिए तो रिप्लेस x विद x माइनस k, रिप्लेस x x में. तो अगर आपको 3 मोर चाहिए या जो भी है 3 मोर चाहिए तो रिप्लेस x विद x माइनस 3. डू यू अंडरस्टैंड किड्स? Yes, sir. So you get a new quadratic equation, 3 more या k more. Form an equation whose roots are reciprocal of the root. अगर reciprocal होगा replace x with 1 by x and then simplify it. So for example, you want a quadratic whose roots are इसका reciprocal, मतलब whose roots are this and this. Do you understand, kids? Reciprocal. Yes, sir. तो करना क्या है? Replace x with 1 by x. Audience understood? Yes, sir. And I can just multiply by x square and automatically I get a new quadratic. Is it clear? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. So I think आगे का पार्ट आप रीड कर लो. I think वो रीड करके काफी हो जाएगा. I think तो हम लोग अभी खामखा. Okay, ठीक है. Next. To form an equation whose roots are square of the roots. Square of the roots. मतलब suppose वही equation लेता हूं मैं.
सपोज इसके रूट्स है मेरे पास -2 -1, तो मुझे वो क्वाड्रेटिक ढूंढना है जिसके रूट्स आर 4 and 1, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर्स। तो करना है क्या है, स्टेप्स। फर्स्ट, रिप्लेस x विथ रूट x, रिप्लेस x विथ रूट x। ओके, यहां पर किया तो मैं करके बताता हूं। सो यहां पर रिप्लेस x विथ रूट x, देन collect all term involving root x on one side. So I'm collecting all the term involving root x on one side, and then square both sides and simplify to get the new quadratic equation, new cubical equation, or whatever equation is. Did you understand? Did you understand? Yes, sir. Okay. So यहाँ पर कैसा हो जाता, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3 root x plus 2. I can shift that 3 root x on the right hand side and then do squaring both sides. So I'll get a new equation whose roots are 4 and 1. ठीक है ना kids? Yes, sir. Similarly, I think now this तो I think read कर लो. To form an equation whose roots are the cubes of the root. Cubes है तो क्या करने का? Replace x with x is to 1/3. Collect all terms involving x is to 1/3 and x is to 2/3 on one side, and then do cubing both sides to simplify. ठीक है ना kids? Yes, sir. Finally, the last part, okay, this is also an extra thing, but good to know. इसे कहा जाता है Descartes rule of sign. Descartes rule of sign. ये Descartes rule of sign क्या होता है? It helps you in identifying the maximum number of positive and negative roots in an equation. It helps you in identifying the maximum number of positive or negative roots in the equation. What does it mean? I give an example. Suppose I give you x square minus 3x plus 2. चलो orally tell me what are the roots here? 2 and 1 kids? हाँ के नहीं? Yes, sir. पक्का ना? अरे पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो इसका रूट्स 2 and 1 है, बिकॉज x minus 2 x minus 1, then 2 and 1 हो जाएगा रूट्स उसका ना। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव रूट्स है ना किड्स, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। Yes, sir. यहाँ के नहीं। एंड सी वी कुड डू इट वेरी इजीली, यू नो, बिकॉज वी कुड डू सिंपल इक्वेशन, ओरली हो गया, लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं होगा ना किड्स। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को कहा जाता है डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। उसका बेनिफिट क्या है वो देखते हैं हम। रूल 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। अगर आपको पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, अगर आपको पता करने हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स पता करने हैं तो आपको क्या करना है? ठीक है, पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, इज द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ द साइन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? चेक दिस आउट kids, look at the sign. What is x square का sign? Positive. Positive. So it is becoming positive to negative, है ना kids? So it's the Yes, sir. first change. Do you see this? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And then it becomes negative to positive. So it is the second change, है ना kids? Yes, sir. How many changes? How many changes has happened? 2 changes, na? Two. So there are 2, at the most there are 2 positive roots. Do you understand? 2 positive roots. Let's take this example. Positive to positive, so no change. No change. Wow, 1 change. There is first change happens. So what is the maximum number of positive root, kids? 1. At the most 1 positive root. So this is a shortcut helpful to identify. That's it. Is it okay, kids? Yes, sir. चलो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं देखते हैं। अरे यार, तो ऐसे x square minus 3x plus 2. Suppose I'll just write a plus sign this time. For negative root, what I should do? Replace x with minus x. Okay, मैं चलो कुछ और इक्वेशन लेता हूँ so that you know you don't feel कि मैं एक ही इक्वेशन ले रहा हूँ।
Now see, by looking at the equation, anybody can tell you, suppose if I write like this, you all know there are two negative roots, okay? But I'll just explain you. तो अगर आपको negative root identify करना है तो क्या करना है? Replace x with minus x. Replace x with minus x. Oh, so this will be positive. Replace x with minus x. And now check it out. Look at the number of changes happening, okay? Positive to negative, so it is first change. Negative positive is the second change. So there are two changes happening here. So there are how many negative roots, kids? There are maximum two negative roots. तो करना क्या है मेरे भाई? करना कुछ नहीं है. अगर आपको पॉजिटिव रूट चाहिए तो फंक्शन को कुछ नहीं करने का, वहीं पर चेक करने का सीधा कितना चेंज हो रहा है. Number of changes is equivalent to the maximum number of positive roots. For negative root, you should do replace x with what, kids? What? Minus x. Minus x. And then you see the number of changes. Is it clear? Yes, sir. Okay. So kids, what you're seeing here is the chapter is done. So pretty happy that we have finished off with the chapter. एक मिनट पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे.